If an opaque means that you cannot see through, object is placed between a point source of light and screen. Now see, if a light source of light is there and opaque object is placed between screen and light, then as per the rules of geometrical optics, a well-defined and distinct shadow of object should be obtained on the screen. Then a well-defined and distinct shadow બહુ જ अच्छी જેને પૂરી રીતના આપણે ડિફાઇન કરી શકે છે અને ડિસ્ટિંક્ટ એટલે પૂરી રીતના દેખાઈ શકે એવી ઓબ્જેક્ટ ઓબ્ટેન થાય છે સાના ઉપર સ્ક્રીન પર. નો લાઇટ શુડ બી ઓબ્ઝર્વ ઇન ધ રીજન ઓફ શેડો. એ જે લાઇટ છે એ રીજન ઓફ શેડો છે. કાલે જ દેખ્યો રીજન ઓફ શેડો શું હોય છે. આ રીજન ઓફ શેડો છે. જોમેટ્રિકલ શેડો એટલે એ જ રીજન ઓફ શેડો છે. આપણા શેડો આવશે સ્ક્રીન છે એ પણ બિલકુલ લાઇટ ઓબ્ઝર્વ નહીં થાય. ઓકે, आता एखादा ऑपेक ऑब्जेक्ट आहे आणि पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट आणि स्क्रीनच्या मध्ये इथं बघूया. समजा हा लाईट सोर्स आहे आणि स्क्रीन आहे. ह्याच्यामध्ये जर आपण एक आता ऑपेक ऑब्जेक्ट ठेवला, ऑपेक म्हणजे इथलं तिथं नाही दिसणार. whatever you are able to see from here, you will not able to see that what in the back of screen it is happening. You will not able to see that. So a well defined and distinct shadow will be obtained, and in region of shadow no light will be observed. Okay, अगर हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स और लाइट स्क्रीन के बीच में रखा तो रूल्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रूल्स के हिसाब से हमें एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट शैडो मिलेगा ऑब्जेक्ट का, जो बीच में ऑब्जेक्ट रखा है ना उसका. तो लाइट और बिल्कुल भी लाइट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम लोग रीजन ऑफ शैडो में. समझा? When you keep a point of source and screen, when you keep between point and source and screen that nice opaque object, then as per the rule of geometrical optics, a well defined and distinct shadow of the object will be seen on the screen, and in that region of shadow no light will be observed. Okay, but the pattern obtained on the screen is in the form of alternate dark and bright rings with the spot at the center of the shadow. वो जो but the pattern which is obtained on the region of the shadow, that is in the form of alternate dark and bright rings. Dark and bright rings with the help of a bright spot at the center of the shadow. अब हमने ये देखा कि वो जो स्क्रीन पे इमेज आ रही है शैडो की, वह अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक अल्टरनेट डार्क और या फिर ब्राइट रिंग्स में विद अ ब्राइट स्पॉट, मतलब एक ब्राइट धब्बा सेंटर में शैडो के ऐसे. सो
This spot cannot be explained on the basis of rectilinear propagation of light, but can be explained on the bending of light in the region of shadow. इसका क्या मतलब है कि वो स्पॉट है वो हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पर वही स्पॉट हमें बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू द रीजन्स ऑफ शैडो से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके.